Family of Hizbul Mujahideen militant Tawseef Sheikh from Rampura village of Kaimu area in Kulgam district on Thursday alleged that forces during the intervening night of July 26-27 barged into their house and trashed the inmates. However, they said after women raised alarm, villagers came out from their homes and assembled outside the house, triggering clashes between people and forces. The villagers pelted stones on the forces, forcing them to leave. Family member also alleged that later forces came after few hours and started direct to tear gas shelling from three sides. They said forces barged inside and started beating all inmates including female members, resulting into injuries. The family members were later rushed to nearby health center for immediate treatment. The militants' family also alleged that forces damaged their property. गड़ त्रोक अकि छाप तो गो हल्दी तो गई पत आए रात 3 बजे 3 बजे हसा कर यमो शेलिंग जबरदस्त फायरिंग गामस दितुक नबर नेरन कह यम रटक अलग अलग माज कोट कुठन मज तो दित हे चो बे हसा त्राक वारंडा किन आयजान यमन सनित नाड़ि जंग फड़ायित अगर हसा यी छु असूल तो तेल छु यी जनान मोहन पे छ यह जुलुम अगर यमन गनमैनन सत छु मगर जनान मोहन क्या यमन हसा फुड़क यमन अनहरशन कोरन कमर बे हसा त्रायक ये वारंडहस आयजान राजन गंजक अलग अलग कमरन बे लॉकड़ बच्चे दोद चवन तमिस कड़ थापड़ तमिस फिर गर्दन बेस अंदर ऑपरेशन आव अकिस दोपहर चे अद ऑपरेशन तो तमिस फुड़ौक जंग तो सुनिक सा बुथवारी दारित टास्क फोर्स पुलिस आर्मी सारे खोत गाड़ थोक कहें चोट पट यमो दपा गड़न तुम मकदम बे दपा गड़न पुलिस तो मकदम अत पुलिस ने जुलुम कर तो मकदम सुन क्या चल कश्मीर प्रेस सर्विस कुलगाम. This news is brought to you by Hotel CS2, where quality rules. Contact Hotel CS2, Salwar Bagh, Srinagar, Kashmir. Phone number 0194246850 2468 Reservation at Hotel CS2. Log on www.hotelcs2.com.